Let's start with October-November 2022, variance 42. The duration of this paper is 2 hours. Let's start the paper. Let's see what we have in this. Calcium chloride is an ionic solid. The values of some energy changes are shown in table 1.1. So I think we have lattice energy, atomization of calcium, first and second ionization energy, atomization of chlorine, and first electron affinity of fluorine. Okay, so in the first part, examiner is talking about the definition of lattice energy, and we have discussed this in the class that amount of energy released when 1 mole of ionic solid is formed from its gaseous cation and anion. All right. In the next part, use of the data in table 1.1 to calculate the standard enthalpy change of formation of calcium chloride. It may be helpful to draw an energy cycle, show all your work. Okay, so that's basically the Born-Haber cycle, और मैंने आप लोगों को Born-Haber cycle explain करके दिखाई थी, समझाया था कि किस तरह से construct होती है. So since it has 2 marks, तो हमें बहुत detail वाली Born-Haber cycle नहीं बनानी चाहिए. जो सिंपल फॉर्मेट की है वो बना लेते हैं जिसमें हैसेस लॉ फॉलो हो जाए. तो ये हो जाएगा गैशियस कैल्शियम आयन reacting with gaseous chloride ion, converting into calcium chloride, and under standard condition it is solid. So that's your lattice energy, by the way. Now solid calcium and gaseous chlorine molecule when react together to give 1 mole of ionic solid, that's called standard enthalpy change of formation. Whereas when these constituent elements will turn to these ions, obviously हम इसको represent करेंगे delta H1 से, because delta H1 contain various enthalpy changes. In order to arrange the value, हम clockwise direction में arrow बना देते हैं. And obviously ये value और ये value plus होगी, ये value minus होगी. So हम इसको arrange कर लेते हैं in a way. ये हो जाएगा हमारे पास delta H1 plus lattice energy minus delta HF equals to 0. Now delta H1 में क्या क्या है? Atomization of calcium, first ionization energy of calcium, second ionization energy of calcium, plus atomization of chlorine. Atomization of chlorine के बाद हमारे पास है first electron affinity of chlorine, and since we have 2 chlorine atom in the compound, तो उसकी energy की value को into 2 करेंगे. So that is your delta H1 plus lattice energy as it is minus delta HF, which we want to calculate, equals to 0. Let's plug in the values in this formula. Atomization of chlorine is basically, sorry, atomization of calcium is basically 193. First ionization energy of calcium is 590, then 1150, plus atomization of chlorine is basically 121. So we need to multiply by 2 because we have 2 chlorine atoms.
first electron affinity of chlorine is -364, yeah, into 2 because we have 2 chlorine atom in the compound, plus lattice energy is basically -2237 -2237 डेल्टा HF की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है इक्वल्स टू 0. सो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास डेल्टा HF की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -790 kilojoules per mole. So ये लेगा -790 kilojoules per mole. All right. I hope it makes sense to you. Let's move on to the next part of the question. 3 possible values for the first electron affinity of bromine are shown in table 1.2. One of them is correct. Please place a tick by the correct values. Explain your choice. So first of all, let's talk about the electron affinity. Electron affinity is basically, it is a measure of the attraction between the incoming electron and the nucleus. It is a measure of the attraction between incoming electron and the nucleus. All right. The higher the attraction, the higher the electron affinity. And electron affinity is represented by capital EA. Down the group, atomic size increases. Obviously, attraction decreases. So electron negativity, electron affinity value decreases. But decreases bole ya less exothermic bole, doesn't make any difference. That means the electron affinity of bromine is lower than that of chlorine, and therefore this is going to be the correct option. Or explanation. So आप यहाँ लिख सकते हैं bromine has larger radius so its attraction becomes weaker. And then lower the electron affinity value. Okay. Now in the next part, the enthalpy change of hydration of chloride ions can be calculated using the lattice energy of calcium carbonate and the data shown in table 1.1. Data जो है उसमें standard enthalpy change of solution of calcium chloride given है, hydration of calcium ion given है. Define the following term: enthalpy change of solution, and that's we have done in A1. Enthalpy change
occur when 1 mole of compound is dissolved in large amount of water to give an infinite dilute solution. All right. Obviously under standard condition भी लिख सकते हैं, but 2 marks हैं तो इसका मतलब 1 mark की definition है. लिख देते हैं ये बात भी under standard condition. But standard बोल नहीं रहा इसलिए मैंने लिखा नहीं था. अगर बोल दे तो standard जरूर लिखिएगा. All right. Next is enthalpy change of hydration. Enthalpy change when gaseous cation and anion, gaseous cation and anion is dissolved in large amount of water to give an infinite dilute solution. All right. Now in the next part of the question, calculate the standard enthalpy change of hydration of chloride ion. It may be helpful to draw an energy cycle, show all your working. Okay, so we need to find out the hydration by using solution and lattice energy. So let's make the cycle first. This is calcium chloride, I believe. When you place it in large amount of water, obviously it will turn to aqueous calcium ion and aqueous chloride ion. That's your standard enthalpy change of solution. When we use gaseous calcium ion and gaseous chloride ion, and if you place them in large amount of water to give aqueous ions, obviously usko hydration enthalpy bolenge. And it's going to be lattice energy because 1 mole of ionic solid is formed from its constituent gaseous ion. बात समझाने के लिए clockwise direction में arrow. And obviously from this cycle we conclude a standard enthalpy change of solution plus lattice energy minus hydration equals to 0. And obviously standard enthalpy change of solution अगर आपको calculate करना हो, so it's going to be minus Le plus hydration. That's what we have done in the class. Now we need to plug in the value in this formula and let's see what we will get as an answer. The standard enthalpy change of solution is basically minus 83. That's given in the data in table, in this table actually. All right. Lattice energy of calcium chloride is given on the previous page in the table, which is 2237. So that's minus 2237 plus hydration for cation and anion both. Cation ki hydration is given, which is minus 1650. Hydration ki cation we need to find out, and since we have 2 chloride ion in the formula, so we need to write here 2x. Now we need to find out the value of x, and I believe it's going to be the easiest one now. So ये हो जाएगा minus 83 plus 2237 plus
minus 1650 plus 2x. So from here, I can find the value of x, which is going to be minus 3. Let me calculate. Minus 335 kilojoules per mole. So it's going to be minus 335 kilojoules per mole. Yeah. That is 2237. Just hold on a second. Let me confirm this value. Plus 83, 2230 minus 100. 7 minus 16. 37 plus 83. Yeah, 335. That's perfect. Let's move on to the next part of the question. Calcium fluoride can be synthesized directly from its elements. Let me show you the equation here. Calcium and fluorine are reacting together, converting into calcium fluoride. That's called standard enthalpy change of formation. Under constituent elements, ये solid होगा, ये gas होगा, और ये solid होगा. Okay. The delta HF value for this compound is given. ये हमें delta HF की value भी given है इसकी minus 1214 kilojoules per mole. Now he's saying predict the sign of the entropy change delta S naught for this synthesis. Explain your answer. The sign of the entropy change is obviously negative. Obviously negative. Why negative? क्योंकि reactant side पर gaseous molecules और product side पर solid है. तो reactant side पर entropy ज़्यादा है, product side पर solid होने की वजह से ordinance ज़्यादा होगी, entropy कम हो जाएगी. तो explanation आप ये दे सकते हैं. Give more gaseous molecules on the reactant side. Then product side. Hence, this ordinance decreases. So entropy decreases. और जब entropy decrease होती है, reaction is non-spontaneous हो जाता है, जिसकी वजह से sign negative होता है. Now in the next part, use the value of delta HF given in E and your answer to E part 1 to predict how the feasibility for this synthesis will change with increasing temperature. So feasibility is basically linked to Gibbs free energy, और उसका relationship है delta HR minus T delta S naught. All right. Delta HR की वैल्यू मेरे पास है माइनस, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, ये गिवन है वैल्यू -1214. तो मुझे वैल्यू नहीं चाहिए, मैंने उसका साइन ले लिया है सो दैट मैं डिटरमिन कर सकूं कि होगा क्या. माइनस टी एज इट इज बिकॉज वी नीड टू फाइंड आउट कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा. एंट्रोपी की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आई है तो हम इसको भी नेगेटिव ले लेते हैं. ये माइनस का साइन एज इट इज, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा, और ये माइनस माइनस बिकम्स प्लस. ठीक है, माइनस माइनस बिकम्स प्लस. तो अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूं तो जाहिर सी बात है ये जो टी डेल्टा एस नॉट टर्म है ये मोर पॉजिटिव हो जाएगी, जिसकी वजह से डेल्टा जी नॉट जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा. ऑलराइट, इसका मतलब जब वो डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव होगा दैट मींस रिएक्शन जो है वो लेस फीजिबल होगा एट हाई टेम्परेचर. सो हम यहाँ लिख सकते हैं, लेट मी अरेंज दिस होल थिंग. हम यहाँ लिख सकते हैं increasing the temperature
makes T delta S naught becomes more negative, sorry, becomes more positive. So delta G naught is also positive. Thus reaction is not feasible at high temperature. All right. So हम यहाँ लिख देते हैं कि delta G naught becomes positive at high temperature. All right, guys. That was the end of question number 1. Let's start with question number 2. Nitrogen monoxide NO reacts with ozone, which has a formula of O3. Equation is given. This reaction is first order with respect to both NO and O3. Okay, fine. हमें NO और ozone का order दे दिया है at 298 Kelvin. The rate constant K has a value of this. Complete the rate equation for this reaction. So rate equals to K concentration of NO. क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है तो पावर 1 लिखेंगे. कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन फर्स्ट ऑर्डर है तो पावर नहीं लिखेंगे. ठीक. A reaction is carried out in which the initial concentration of NO and O3 are both 1.2 into 10 to the power minus 6 mole per dm cube. Calculate the initial rate for the reaction stating the units. तो guys सबसे पहले तो आप rate equation लिखेंगे. Rate equals to K concentration of NO concentration of ozone. Okay, now we need the value of K. K की value is given, which is 11,500. Concentration of NO 1.20 into 10 to the power minus 6 is given. Concentration of ozone is also given, 1.20 into 10 to the power minus 6. So the value of rate is going to be 1.66 into 10 to the power minus 8. ओके, यूनिट आइडेंटिफाई करना चाहते हैं हम. यूनिट थोड़ी सी वर्किंग करके दिखा देते हैं आपको. रेट की यूनिट होती है मोल पर डीएम क्यूब सेकेंड इनवर्स. यहां से जो यूनिट आ रही है मेरे पास, दैट्स द यूनिट ऑफ रेट, मोल पर डीएम क्यूब सेकेंड इनवर्स. राइट इट एज इट इज. ठीक है, और यहाँ आंसर आ जाएगा बेटा 1.66 into 10 to the power minus 8. That's my answer. फिर वो कह रहे हैं the reaction described in A part 2 is monitored over a period of time. Predict whether or not the graph of concentration of NO against time under these conditions shows that the reaction has a constant half-life. Explain your answer. That's the most important statement. Reaction जो है वो तो ओवरऑल सेकंड ऑर्डर रिप्रेजेंट कर रहा है. इसका भी फर्स्ट है, इसका भी फर्स्ट है, तो रिएक्शन को ओवरऑल ऑर्डर सेकंड है. तो जब रिएक्शन को ओवरऑल ऑर्डर सेकंड होगा तो ऑब्वियसली कंसंट्रेशन ऑफ NO अगेंस्ट टाइम का जो ग्राफ है वो कांस्टेंट हाफ लाइफ का नहीं होगा. ठीक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट गाइस. shows that the reaction has a constant half life. रिएक्शन की कांस्टेंट हाफ लाइफ नहीं होगी बिकॉज रिएक्शन तो सेकंड ऑर्डर है. प्रेडिक्शन इज no constant half-life. Why? Because reaction has an overall order of second. ठीक है. Now the next part is nitrous oxide decomposes into its elements at high temperature. A small amount of platinum wire is added to a large amount of nitrous oxide. Again, very important statement. Large amount of nitrous oxide means nitrous oxide has to be in excess, right? और जब कोई चीज excess amount के अंदर होती है तो उसकी concentration determine नहीं की जा सकती, which is why examiner is saying reaction follows zero order kinetics. The platinum wire behaves as a catalyst.
sketch a graph on the axis below of rate of reaction against time for the catalyzed decomposition of N2O under these conditions. Obviously, अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट वर्सेस कंसंट्रेशन जो है वो रेट वर्सेस टाइम जो है वो कांस्टेंट होगा बेटा आपके पास, लाइक दिस, बिकॉज जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स क्या है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में तो रेट वर्सेस टाइम इज जीरो, कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है, रेट भी कांस्टेंट रहता है, ठीक है. Sketch a graph on the axis below of concentration of N2O against time for this reaction. Okay, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है हमारे पास. हम यहाँ बता दें कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन था ड्यू टू लार्ज एक्सेस, जीरो ऑर्डर रिएक्शन ड्यू टू large amount, right? So concentration versus time for zero order reaction has to be like this. That's what we have discussed in the class. इसमें gradient constant होगा, the rate constant होगा, और zero order reaction में rate हमेशा constant होता है. Platinum behaves as a heterogeneous catalyst in this reaction. Describe the mode of action of heterogeneous catalyst. So that's easy. हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं. Gases are diffused onto the surface of catalyst adsorption via active sites takes place onto the surface of catalyst this adsorption lowers the activation energy due to series of reaction. Products are formed which then leave due to desorption, which then leave the surface of catalyst due to desorption. Suggest a reason why this reaction has zero order kinetics when the amount of nitrous oxide is large and the amount of platinum is small. जब प्लैटिनम यानी कैटलिस्ट की क्वांटिटी कम होगी और रिएक्टेंट की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो वो रिएक्टेंट्स कैटलिस्ट की सारी एक्टिव साइट को कंज्यूम कर लेंगे. सो एक्टिव साइट्स पर फर्दर रिएक्टेंट्स के लिए अवेलेबल नहीं रहेगी, जिसकी वजह से ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस reactants like nitrous oxide are in excess, so they will utilize the active site of catalyst
hence catalyst, hence active site of catalyst are no longer available for the reaction. Okay, that's the end of question number 2. Let's move on to the next question. Data should be selected from table 3.1 in order to answer some part of this question. Okay, तो हमें E naught की values का data given है, obviously ये बहुत important होगा हमारे लिए. Now we need to read the question very carefully in such cases. An electrochemical cell can be constructed from magnesium half cell and manganate 7 half cells. The standard cell potential of this cell can be calculated using the standard electrode potential of the 2 half cells. Define standard electrode potential, include details of the standard condition used. Okay. Standard electrode potential is basically the potential difference of a cell in which the test electrode का मतलब जिस electrode की हमें SEP की value, standard electrode potential की value find out करनी है, in which the test electrode is attached to standard hydrogen electrode at 1 atm pressure under 298 Kelvin with 1 mole per dm cube solution electrolyte. All right. Complete the diagram below to show an electrochemical cell constructed from a magnesium half cell and manganate 7 half cell. Label your diagram. Okay, so that's an easy task, by the way. That's my magnesium half cell. Okay, it's going to be voltmeter, and it's going to be the magnet 7 half cell. Okay, so first of all लेबल कर देते हैं, ये है आपका voltmeter, and obviously हम यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज भी लगा देते हैं. ठीक है, so this is your voltmeter, which is also called high resistance voltmeter, and that's also called potentiometer, right? This is your magnesium metal, this is your magnesium ion electrolyte with a concentration of 1 molar. 1 molar means 1 mole per dm cube. This is platinum electrode. मैंने क्लास में बताया था आपको कि जब आयंस और गैसेस इन्वॉल्व होते हैं किसी भी इक्वेशन रिएक्शन के अंदर, तो हम हमेशा प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं. ऑलराइट, यूज किया. ऑब्वियसली मैग्नेट आयंस हमारे पास, तो इनकी कंसंट्रेशन 1 मोल पर डीएम क्यूब लेंगे, दैट इज 1m. Mn2 प्लस भी है हमारे पास इक्वेशन के अंदर, उसकी भी कंसंट्रेशन 1 मोल पर डीएम क्यूब. हाइड्रोजन आयन भी इक्वेशन के अंदर है, अगर आप इसकी हाफ सेल इक्वेशन देखें डेटा टेबल के अंदर, उसकी भी कंसंट्रेशन 1 मोल पर डीएम क्यूब लेंगे. ये आपका सॉल्ट ब्रिज है, इसको हम मेंशन कर देंगे. सॉल्ट ब्रिज आप पोटेशियम नाइट्रेट का बनाना चाहते हैं, पोटेशियम क्लोराइड, दैट्स टोटली अप टू यू.
All right, now in the next part, use a positive sign and a negative sign to identify the polarity of each of the two electrodes in your diagram. Use an arrow and the symbol of E to show the direction of electron flow in the external circuit. Okay, so मुझे कैसे पता चलेगा which one is positive and which one is negative? So we need to look at the SCP की value. Guys, this is the value negative and this is positive SCP value. तो जो positive half cell होता है उसका positive terminal होता है, तो इसका मतलब मैग्नेट 7 आयंस जो हैं वो आपके पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएंगे, राइट? ये आपका नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमेशा फ्लो करता है फ्रॉम नेगेटिव हाफ सेल टू पॉजिटिव हाफ सेल इन द एक्सटर्नल सर्किट। ऑलराइट, एरो से बता दिया हमने, इलेक्ट्रॉन्स को भी शो कर दिया। दैट्स द इक्वेशन डायग्राम। Calculate the standard electrode potential for this cell. Okay, that's an easy task. Let's apply the formula here. E naught cell equals to E naught right minus E naught left. E naught right के अंदर हमेशा more positive value आती है, which is 1.52 volt. I think यही given है, yes. और मैग्नीशियम की SCP की वैल्यू डेटा है -2.32, sorry, -2.38. So E naught cell की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी प्लस, let me calculate this, plus 3.90 volt. Okay, plus 1.52 is going to be 3.90 volt. तो हम यहाँ लिख देते हैं plus 3.90 volt. Construct an equation for the reaction, for the cell reaction, and that's the trickiest part. And what we can do is कि हम इसमें से कुछ इक्वेशंस को एज इट इज कॉपी कर देते हैं। देखो हमने क्लास में ये बताया था कि जिसकी एससीपी की वैल्यू पॉजिटिव होगी उस इक्वेशन को हम रिडक्शन इक्वेशन में एज इट इज कॉपी करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस इक्वेशन को एज इट इज कॉपी कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है? बात समझा देते कि हम काम क्या कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा MnO4 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन एरो Mn2 प्लस 4H2। ऑलराइट, और जिसकी एससीपी की वैल्यू नेगेटिव है उसको ऑक्सीडेशन फॉर्म में लिखने के लिए फ्लिप करके लिखते हैं। याद रखिएगा, इक्वेशन फ्लिप करेंगे, वैल्यू फ्लिप नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम एरो magnesium ion plus 2 electron. Now we need to balance the number of electrons, and for that मैं इस equation को 2 से multiply कर लूंगा और इस equation को 5 से, so that number of electrons balance होकर cancel हो जाए। So मेरी final equation होगी 2 MnO4 negative plus 16 hydrogen ions plus 5 Mg arrow 5 Mg2 plus 2 Mn2 plus 8 H2O, and that's my final equation. इस इक्वेशन को हम ट्राई करते हैं एज इट इज कॉपी करने की और वहां पर पेस्ट करने की, ठीक है? लेट मी चेक, ये यहाँ आ सकती है। Oops, we need to write it again. I hope आपको समझ में आ गया हो, मुझे दोबारा लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। Let me write it. 2 MnO4 negative plus 16 hydrogen ions plus 5 magnesium, then फिर ये हो जाएगा 5 magnesium ions plus 2 Mn2 plus 8 H2O. I hope it makes sense to you. Now in the next part, predict how the cell reaction will change, if at all, when the solution in the magnesium half cell is diluted by the addition of a large volume of water. Explain your answer. See guys, सबसे पहली तो बात ये है कि ये आपका हाफ सेल है जिसकी वो बात कर रहा है, सही है?
और आप जानते हैं इस हाफ सेल की एसीपी की वैल्यू है -2.38 वोल्ट। अब जब आप लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर यूज करेंगे, सो दिस मेक्स द सॉल्यूशन डाइल्यूटेड। तो हम यहाँ लिखेंगे लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर makes the diluted solution और जब solution diluted होगा तो obviously मैग्नीशियम आयन की concentration कम हो जाएगी। So this decreases the concentration of magnesium ion। जब मैग्नीशियम आयन की concentration कम होगी तो equilibrium favors towards left hand side, oxidation favorable होगी। So equilibrium favors towards left hand side, oxidation is favorable। अच्छा जी, तो जाहिर सी बात है जब ऑक्सीडेशन फेवरेबल होगी तो वैल्यू मोर नेगेटिव ही रहेगी। ठीक है, सो ई नॉट वैल्यू will become more negative। All right, I hope it makes sense to you। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेल रिएक्शन में तो कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। पहले भी ऑक्सीडेशन फेवरेबल थी बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव वैल्यू, आपने इसकी कंसंट्रेशन कम कर दी, अभी भी बैकवर्ड ही रहेगा, फेवरेबल यू। तो नो चेंज एज सच इन द रिएक्शन, नो चेंज in the reaction। I hope it makes sense to you। Next part of the question, a molten magnesium salt is electrolyzed for 15 minutes by a constant current। 4.75 into 10 to the power 22 magnesium atoms are produced at cathode। Calculate the value of the current used। Okay, the simple format of the question is that we need to find out the value। Okay, we need to find out the value। So let me solve this। It requires a lot of calculation। So in my first part, 1 mole of magnesium has 6.02 into 10 to the power 23 atoms। एग्जामिनर ने मुझे 4.75 into 10 to the power 22 atoms दिए हैं। So from this value I can find the moles of magnesium। So moles of magnesium at this stage is going to be 4.75 4.75 exponent 22 divided by 6.02 exponent 23। So it's going to be 0.0789। Yeah, 0.0789 moles। Now reaction taking place at cathode। आप सब जानते हैं कि कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होती है। At cathode reduction takes place। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम आयन इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे मैग्नीशियम मेटल में। तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम आयंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एरो मैग्नीशियम। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ये 2 मोल है, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ये 1 मोल है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट ये 0.0789 मोल है। तो ऑब्वियसली मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे?
तो मेरे पास यहाँ से मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 0.0789 multiplied by 2, so you are going to get 0.157 moles. All right, now in the third step हमारे पास formula है moles of electron equals to charge over Faraday constant. Charge over Faraday constant. Charge over Faraday constant. So I know the value of Faraday constant. I know the moles of electrons, so I can find the value of charge. तो ये हो जाएगा moles of electrons 0.157 into Faraday constant की value is fixed, which is given in the table 96500. So charge is going to be 0 multiplied by 2 is going to be 0.157 into 96500. So it's 1522.8.405 coulombs, right? ये मेरा चार्ज आ गया. Now in the last step हमें पता है charge is always equals to current into time, right? और हमसे current calculate करवा रहे हैं. हमारे पास charge है 15228.405 equals to current हमें find out करना है. टाइम हमारे पास है 15 मिनट्स. इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 60 कर देंगे. तो 15 टाइम्स 60, तो यहाँ से करंट मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा? करंट मेरे पास आ जाएगा so current is going to be 16.9 amperes. तो हम यहाँ लिख देंगे 16.9 amperes, right? I hope it makes sense to you. Let's move on to the next part of the question. वो कह रहे हैं the value of the solubility product of iron 3 hydroxide is given by the following expression. Okay, KSP की value is given for this expression. Calculate the solubility of iron 3 hydroxide in water. Okay, first of all, आपके पास है iron 3 hydroxide. आप इसको आयनाइज करेंगे तो ये कन्वर्ट होगा Fe3+ आयंस में और हाइड्रोक्साइड आयंस में. अकॉर्डिंग टू द रेशियो ये 1 मोल है और ये 3 मोल है. तो अगर ये x लिया है तो ये क्या हो जाएगा? 3x. सही है ना? ये 1 मोल, ये 3 मोल. अगर ये x लिया है तो ये क्या होगा? 3x हो जाएगा. तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि 3x और x, राइट? तो KSP का एक्सप्रेशन हम अगर अप्लाई करें जो कि क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ भी है, तो ये हो जाएगा Fe3+, उसकी जगह पे x रखूंगा. OH- की जगह पे 3x रखूंगा. सिंस OH के 3 मोल्स हैं तो पावर क्यूब करूंगा. KSP की वैल्यू मेरे पास है 2.0 इंटू 10⁻⁻39 और ये हो जाएगा आपके पास 27x4, राइट? तो यहां से x की वैल्यू बेटा मेरे पास आ जाएगी 9.28 इंटू 10⁻⁻11 और सॉलिबिलिटी है तो मोल पर डीएम क्यूब 9.28 into 10⁻⁻11. Okay, now in the next part, calculate the solubility of iron 3 hydroxide in 0.010 mole per dm cube barium hydroxide. So guys, first of all, barium hydroxide में hydroxide आयन कितने हैं ये फाइंड आउट कर लेते हैं. ये 1 मोल है, ये 2 मोल है, राइट? अगर आपने 0.0100 ली है कंसंट्रेशन, तो ऑब्वियसली हाइड्रोक्साइड आयन की भी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? टाइम्स 2 करके 0.0100 इंटू 2, इट्स गोइंग टू बी 0.020 मोलर. मोलर का मतलब मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है? सो हाइड्रोक्साइड आयन बेरियम हाइड्रोक्साइड की वजह से मुझे 0.020 मोल पर डीएम क्यूब मिल रहा है. अगर मैं इस कॉन्सेंट्रेशन के अंदर सॉलिबिलिटी डिटरमिन करूं आयरन 3 हाइड्रोक्साइड की, तो मैं केएसपी के एक्सप्रेशन फॉलो करूंगा, व्हिच इज KSP equals to concentration of Fe3+ and concentration of hydroxide ion
पावर क्यूब, क्योंकि 3 मोल है। Ksp की वैल्यू विल रिमेन सेम इवन इफ द कंसंट्रेशन इज चेंज, बिकॉज उस चेंज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो 2.0 into 10 to the power minus 39. Now this time I don't know the concentration of Fe3 plus in 0.010 mole per dm cube of barium hydroxide, so it will remain X. और हाइड्रोक्साइड आयन मेरे पास आया है 0.020, मैं इसका क्यूब ले लूंगा, तो यहां से X की वैल्यू कितनी होगी, लेट मी फाइंड आउट। हमारे पास X की वैल्यू आ जाएगी 2.5 into 10 to the power -34 मोल पर डीएम क्यूब। अब जो X की वैल्यू आई है वो एक्चुअली आयरन 3 आयंस की है, राइट? जो कंसंट्रेशन आयरन 3 आयंस की आई है वही कंसंट्रेशन ऑब्वियसली आयरन 3 हाइड्रोक्साइड की भी होगी, क्योंकि दोनों में 1:1 का रेशियो, एज यू कैन सी इन द इक्वेशन। सो दैट्स माय आंसर एक्चुअली 2.5 into 10 to the power -34 mole per dm cube. And the next part of the question, iron 3 hydroxide is less soluble in barium hydroxide than it is in pure water. Name this effect. That's called common ion effect, because hydroxide common ion हो जाएंगे। ठीक है, वो ये कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, मैं बता देता हूं आपको कि आपके पास आयरन 3 हाइड्रोक्साइड है, आपने इसको डिसोसिएट किया हुआ इनटू आयरन 3 आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस। नाउ ही इज सेइंग कि भाई इस सॉल्यूशन के अंदर आपके पास हाइड्रोक्साइड आयंस ऐड हो रहे हैं फ्रॉम बेरियम हाइड्रोक्साइड। सो ऑब्वियसली हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से इक्विलिब्रियम फेवर्स टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। ऑलराइट, दैट्स कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। So common ion effect always decreases the solubility and increases the precipitation. Okay, so precipitation because of backward direction increase हो रही है, जबकि ions की quantity कम हो रही है, that means solubility कम हो रही है। The numerical value of Ka of HBRO is 2.00 into 10 to the power -9. X is a solution of HBRO, which is an acid obviously, and which contain 4 times 10 to the power -3 moles of HBRO in 100 cm cube of solution. In this solution, the following equilibrium is established, in which there are 2 conjugate acid base pairs. Define conjugate acid base pair. Conjugate acid base pair. Conjugate acid proton donors. और conjugate base जो है वो proton acceptors. Okay, this value is important, which we need to remember. This moles and volume is also important for this compound. ठीक है? Identify the 2 conjugate acid base pairs shown in the equation above. Okay, so conjugate acids क्या होते हैं? Positively charged. किससे मिलेंगे? Base से. So acid जो है वो HBRO है, और BRO minus conjugate base conjugate acid है आपके पास H3O plus, और जो base है वो water. Okay. Now in the next part, calculate the pH of solution X. Show all your working. चूंकि HBRO weak acid है, इसका मतलब मैं सबसे पहले 100 cm cube में हमारे पास कितने मोल्स हैं HBRO के? 4 into 10 to the power -3 moles. 4.00 into 10 to the power -3 moles of HBRO. अगर मुझे इसको कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना हो तो मैं 1000 cm क्यूब से कंपेयर करूंगा। 1000 cm क्यूब से कंपेयर करूंगा तो कंसंट्रेशन ऑफ HBRO मेरे पास कितना आ जाएगा?
concentration of HBRO, 4 exponent minus 3 into 1000 divided by 100. So it's going to be 0.04 mole per dm3. In order to calculate the pH value, we need to find out the concentration of HBRO. Now I can apply the formula which is applicable for all weak acids, minus log under root Ka times concentration of acid. We know the value of Ka, we know the value of concentration of acid. तो फिर हम pH की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. K की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन थी 2 into 10 to the power minus 9. 2.00 into 10 to the power minus 9 into concentration of acid is 0.04. So pH की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ जाएगी बेटा 5.05. तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 5.05. ओके, ये हमने 5.05 कैलकुलेट कर ली. Okay. Now, in the next part, a solution containing 2 into 10 to the power minus 3 moles of NaOH is added to solution X. A buffer solution is formed. Calculate the pH of this buffer solution. Okay, first of all, let's find out the value of pKa by using this expression. Ka की value question के अंदर given थी 2.00 into 10 to the power minus 9. तो यहाँ से pKa की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस लॉग 2.00 एक्सपोनेंट माइनस 9 इज गोइंग टू बी 8.69. तो अगर मैं राउंड ऑफ करूं तो 8.69 बन रहा है. ठीक है, ओके. नाउ इन द सेकंड थिंग, जो मेरे पास HBRO है ये एसिड है, राइट? और मैंने आपको क्लास में बताया था कि जब एसिड एल्किली से रिएक्शन करता है विच इज योर NaOH, तो सॉल्ट बनाता है और वाटर बनाता है. तो ये बनेगा BRO नेगेटिव विच इज योर सॉल्ट एंड वाटर. फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट द इनिशियल मोल्स. सो HBRO के इनिशियल मोल्स क्वेश्चन के अंदर गिवन है 4 into 10 to the power minus 3. एल्किली के इनिशियल मोल्स क्वेश्चन के अंदर गिवन है 2 into 10 to the power minus 3. इनिशियली ये दोनों 0. नाउ फाइनल मोल्स निकालें आप. Which one is the limiting reactant? Alkali is the limiting reactant. जितना रिएक्ट हुआ है उतना ही फॉर्म भी होगा. तो सॉल्ट आपके पास कितना फॉर्म हो जाएगा 2 into 10 to the power minus 3. इनिशियली आपके पास 4 into 10 to the power minus 3 है. उसमें से वेट minus 3, उसमें से बेटा 2 into 10 to the power minus 3 रिएक्ट हो गया. तो what's left now? Obviously 2 into 10 to the power minus 3 left. So this is the final amount of acid. This is the final amount of salt of weak acid, which means solution, buffer solution exists कर रहा है. So मैं basically pH equals to pK की value है 8.69 minus log concentration of acid 2 into 10 to the power minus 3 लूंगा over concentration of salt which is 2.00 into 10 to the power minus 3 लूंगा. तो यहाँ से pH equals to 8.69 minus log 1 is 0. तो यहाँ से जो pH की वैल्यू है वो 8.69 आएगी. मैं यहाँ पे लिख दूंगा 8.69. बाय द वे, जब कंसंट्रेशन ऑफ एसिड और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इक्वल होते हैं देन इट इज कॉल्ड हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट. और हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट के ऊपर जो pK की वैल्यू होती है वो एग्जैक्टली pH की वैल्यू के बराबर होती है. दैट्स व्हाट वी हैव डन इन द थ्योरी क्लासेस. ऑलराइट, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. आई होप यू रिमेंबर दिस. वन मोर थिंग, बच्चे कहते हैं कि सर आपने ये जो मोल्स हैं इनको कंसंट्रेशन में क्यों ले लिया है? इसलिए क्योंकि इस सिचुएशन में जो टोटल वॉल्यूम ऑफ बफर सॉल्यूशन है वो सेम है बोथ एसिड एंड सॉल्ट. तो अगर मैं उस टोटल वॉल्यूम को यहाँ रखूंगा तो वो वॉल्यूम रेशियो की वजह से यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा. इसलिए ओवरऑल कैलकुलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. दैट इज वन ऑफ द वे
of solving the problem. आप चाहें तो उसको concentration में convert कर सकते, extra steps बढ़ा सकते हैं, but for 1 mark I think it's more than enough. इससे ज़्यादा आप working मुनासिब नहीं है 1 mark के लिए. All right. Oh, let's move on to the next question. That is question number 5. And question number 5 में हमारे पास है, copper is a transition element. It forms wide variety of compound. Define transition element. Okay, transition element is one. Which can form one or more stable ion having partially filled d orbital. Now the next part is an aqueous solution of copper to sulfate contain this ion complex ions. If an excess of concentrated hydrochloric acid is added to this solution, ligand exchange reaction occurs and this complex ion are formed. Complete table 5.1 to state the geometry and the coordination number of copper and one bond angle in each of the two complex ions. Okay, so we have 6 ligands here. Water के 6 ligand है, तो इसका मतलब octahedral geometry होगी. Coordination number obviously 6 होगा. Bond angle obviously 90 degree का होगा. CuCl4 में geometry is tetrahedral. ये भी हमने क्लास में किया है. इसका coordination number 4 है और इसका bond angle होगा 109.5 degree. ये tetrahedral geometry का angle हमेशा यही होता है. ठीक है. In an isolated copper ions, the d orbital are all degenerate. Complex ions such as this, the d orbitals are non-degenerate. Define degenerate and non-degenerate in this context. Guys, it's simple. Degenerate means equal energy orbital. यानी splitting से पहले. Non-degenerate का मतलब कि ligand ने approach कर लिया, degenerate d orbital की splitting हो गई, तो आप लिख दीजिए orbitals are not equal. ठीक है. Next, explain why the solution of the two complex ion in table 5.1 are different colors. Okay, different colors. Okay, guys, मैं आपको बता दूं, इसका जो है वो मैं बता देता हूं, हमने क्लास में किया. इसका पिंक सॉल्यूशन होता है और इसका जो है वो येलोइश ग्रीन कलर का होता है. ठीक है. तो वो पूछ रहे हैं कि ये दोनों कलर्स क्यों डिफरेंट हैं. तो जाहिर सी बात है, लाइगेंड्स डिफरेंट हैं और जब लाइगेंड्स डिफरेंट होंगे तो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल भी डिफरेंट होगी और उस स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल के डिफरेंट होने की वजह से डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के जो फोटोन है वो एब्जॉर्ब होंगे. सो हम यहाँ लिख सकते हैं ligands are different, so they have different splitting of d orbital. Which means different, which means energy of different frequencies are required
for electron excitation, which is also called electron promotion. All right. Copper 2 ions forms complex containing water molecule and ethane diavatines as ligands. The formula of the complex is this. The ethane diavatine is a bidentate ligand. Explain what is meant by bidentate. They donate two lone pairs to the transition metal ion. Hence, two dative bonds are formed. Hence, two dative bonds are formed. There are three stereoisomers with the formula this. अगर आपको याद हो guys, मैंने क्लास में ये कहा था आपको कि आपके पास यहाँ पर सिचुएशन है टू बाइडेंटेट एंड टू मोनोडेंटेट. सो मैंने आपको क्लास में करवाया कि जब आपके पास सिचुएशन हो पेपर में टू बाइडेंटेट टू मोनोडेंटेट, तो इसका मतलब आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी हो सकता है और ऑप्टिकल भी हो सकता है. एंड दैट्स व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द क्लास इन सच अ डिटेल कि आप यहाँ हैंडल कर लें इसको. वो कह रहे हैं कंप्लीट द थ्री डायमेंशनल डायग्राम्स टू शो दैट दीज थ्री स्टेरियोआइसोमर्स. और क्योंकि वो हमसे 3D डायग्राम मांग रहा है, इसलिए डॉटेड लाइन पिरामिड बनाकर देना है. लेट्स मेक ऑल दीज डॉटेड लाइन इन पिरामिड सो दैट फिर हम उसमें अरेंजमेंट कर सकें. सही है. ये डॉटेड लाइन है और ये हमारा पिरामिड है. ओके. और C2O4 को उन्होंने कहा नहीं हमसे कि आप जो हैं वो बेसिकली 3D डायग्राम है, तो C2O4 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं. ऑक्सीजन एटम, this is CO, this is CO और ये बॉन्ड ऑक्सीजन एटम, this is CO, this is CO. और यहाँ पर आपके पास है वाटर और यहाँ पर आपके पास है वाटर. ठीक है. अब इसका मिरर इमेज अगर हम बनाएंगे तो वाटर यहाँ पर आ जाएगा. इसका मतलब ये 1 और 2 स्टीरियोआइसोमर एक दूसरे के मिरर इमेजेस भी हैं. और अगर आप नोट करें इसमें वाटर जो है वो सेम साइड पे, तो ये सिस आइसोमर भी है. ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन. ठीक है. और अगर मुझे इसमें ट्री बनाना हो तो उसकी बहुत सिंपल सी लॉजिक है कि आप वाटर को एक दूसरे के ऑपोजिट कर दीजिए, इट्स गोइंग टू बी योर ट्रांस. लेकिन जब आप बाइडेंटेट को इस तरह से अरेंज करेंगे, ऑब्वियसली आपको यहाँ इस सिचुएशन में आइसोमर 3 में कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं मिलेगा. एज यू कैन सी इसका मिरर इमेज नहीं बन सकेगा. सही है. वो कह रहे हैं यूज your answer to C2 to answer this question. Stereoisomer 1, 2 and 3 shows two different types of isomerism. Name these two types of isomerism. मैंने पहले कहा था कि इन दोनों के दरमियान ऑप्टिकल भी है और सिस भी है, राइट. लेकिन इन दोनों के दरमियान क्या है? सिस ट्रांस. तो टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म ऑप्टिकल, आइसोमर 1 एंड 2. फिर है आपके पास ज्योमेट्रिकल और आइसोमर है 1 एंड 3. ठीक है. क्योंकि यहाँ सिस है, यहाँ सिस है
और यहाँ ट्रांस हो रहा है, ठीक है, यहाँ सिस है और यहाँ ट्रांस है. Let's move on to the next part of the question. A solution contains 3.70 gram, that's an important mass, of this complex salt dissolved in 100 cm cube of solution. A 25 cm cube sample of this solution is warmed and then oxidized by 0.01 mole per dm cube acidified potassium magnate 7. The redox reaction is shown. ये equation important है. Calculate the minimum volume of 0.010 mole per dm cube acidified potassium magnate 7 needed to oxidize all of the ethane dioate ions in the 25 cm cube sample. Show all your working. ओके और हमें MR दिया हुआ है सॉल्ट का. सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो आपके पास सॉल्ट है इसको हम यहाँ लिख देते हैं Na2 Cu C2O4 taken 2 H2O taken 2. अगर मैं इसको आयोनाइज करूंगा तो मुझे यहाँ से 2 moles of ethane dioate ions मिल रहे हैं as you can see. ठीक है. अच्छा अब इशू है कि मुझे मास ऑफ सॉल्ट दिया हुआ है, MR ऑफ सॉल्ट दिया हुआ है. मैं इन दोनों को यूज करूंगा तो आई कैन फाइंड द मोल्स ऑफ सॉल्ट. सो दिस इज द फर्स्ट मोल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है मुझे, आई मीन निकालना है मुझे, तो ये हो जाएगा 3.70 डिवाइडेड बाय 371. तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा गाइस तो मुझे कितने मोल्स मिलेंगे? मुझे मोल्स मिल जाएंगे 0.0115 मोल्स. ठीक है. जाहिर सी बात है जो कॉम्प्लेक्स है वो 1 मोल है और उस कॉम्प्लेक्स में C2O4 2 - 2 मोल है, तो 1:2 का रेशो है. अगर ये 0.0115 मोल्स थे मेरे पास तो ऑब्वियसली इथेन डायोएट आयंस के मोल्स कितने हो जाएंगे? ट्वाइस हो जाएंगे और ट्वाइस होकर ये मिलेंगे 0.0230 मोल्स, राइट. सो ये होगा 0.015 into 2, तो 0.0230 मोल्स, राइट. अब ये जो मोल्स आपने फाइंड आउट किए हैं ये एक्चुअली 100 cm क्यूब में थे. एज यू कैन सी ये इक्वेशन, ये वैल्यू दी गई है. तो 25 में कितने होंगे ये फाइंड आउट कर ले. सो 100 cm क्यूब में ऑफ C2O4 2 तो अगर आपके पास 25 cm क्यूब थे तो उसमें कितने होंगे मोल्स ऑफ C2O4 2 in 25.0 cm क्यूब. सो गाइज ये आपके पास आ जाएंगे 5.75 into 10 to the power -3 moles. Okay. Now according to the equation MnO4 negative or C2O425 into 10 to the power -3 moles हैं, तो बताइए ये कितने होंगे? तो मोल्स ऑफ MO4 नेगेटिव ये बेसिकली 2, ये वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई होगी, 5 से डिवाइड होगी, तो आपके पास आंसर आएगा 2.3 into 10 to the power -3 moles. ऑलराइट. मुझसे वो कह रहे हैं कैलकुलेट द मिनिमम वॉल्यूम इन दिस कंसंट्रेशन ऑफ KMnO4. सो आई हैव द कंसंट्रेशन, आई हैव द मोल्स, आई कैन फाइंड द वॉल्यूम and it's going to be my last step obviously. So 1000 centimeter cube contain 0.0100 moles of magnate ions. So अगर आपके पास 2.3
इंटू 10⁻³ मोल्स हैं मैग्नेट आयंस के, तो बताइए वॉल्यूम कितना होगा। तो वॉल्यूम ऑफ MnO4 नेगेटिव हो जाएगा 230 cm3। सो मेरा राइट आंसर होगा यहाँ पर 230 cm3। ऑलराइट, सो मेरा राइट आंसर है 230 cm3। Now in the next part, copper 2 nitrate and barium nitrate are both decomposed when heated. Copper 2 nitrate decomposes at a lower temperature than barium nitrate. Suggest a reason for this difference. Explain your answer. तो दो चीजें हैं, पहली बात लोअर टेम्परेचर है, रीजन है, डिफरेंस है, एक्सप्लेन है, राइट। तो जब भी कोई भी नाइट्रेट डिकम्पोज होता है एट लो टेम्परेचर, इसका मतलब वहां पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, और चार्ज डेंसिटी इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि आयनिक रेट स्मॉल होता है और हायर चार्ज होता है। इसका मतलब डिस्टॉर्शन ज्यादा होगी नाइट्रेट आयंस की इन द केस ऑफ कॉपर एज कंपेयर्ड टू बेरियम। दैट्स द एक्चुअल रीजन। अब इसको थोड़ा लिख लेते हैं हम लोग। सो हम यहाँ लिख देते हैं कि कॉपर आयन हैज हाई चार्ज and small ionic radii. So it has high charge density. If it has a high charge density, then it distorts the electrons of nitrate ions very easily as compared to barium ion. All right. Okay, next question, question number 6. Aqueous solution of cobalt 2 chloride is a pink color due to the presence of cobalt 2 ions aqueous. Complete table 6.1 to describe what is observed when the named reagent is added to an aqueous solution of cobalt 2 chloride. जब हम NaOH ऐड करेंगे तो कलर ऑफ कोबाल्ट 2 आयन जो है वो पिंक होगा। ठीक है, स्टेट ऑफ द कोबाल्ट कंटेनिंग सॉलिड होगा ऑब्वियसली क्योंकि प्रेसिपिटेट्स बनेंगे कोबाल्ट 2 हाइड्रोक्साइड के। मैं आपको याद करवा देता हूँ हमने क्या किया है क्लास के अंदर ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ये है आपके पास COH2O टेकन 6 2+, और यहाँ से हमने जब NaOH ऐड किया हाइड्रोक्साइड्स की फॉर्म में तो कोबाल्ट 2 हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स बनेंगे एंड दैट इज योर एसिड बेस रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो जो प्रेसिपिटेट्स हैं उसकी वजह से आपका सॉलिड स्टेट होगी। एन एक्सेस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करवा दें तो हमने आपको बताया था इसका कलर ब्लू होता है और स्टेट जो है वो आपका एक्वस होगा। एक्वस, ठीक है, ये भी याद होना चाहिए। इसको भी याद करवा देते हैं कि हमने इस तरह से करवाया था ये रिएक्शन। अगर आपको याद हो हमने क्लास में ये किया था कि हमने इसको क्लोराइड आयन के साथ रिएक्शन करवाया था, लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ था, COCl4 2- हुआ था और यहाँ से 6 वाटर मॉलिक्यूल चले गए थे और ये आपका बन गया था ब्लू कलर। ठीक है, वो कह रहे हैं आपसे राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन कोबाल्ट 2 आयंस एंड NaOH। ओ दैट्स द इक्वेशन एक्चुअली, तो ये पूछ रहे हैं हमसे। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम यहीं इस इक्वेशन को लिख दें। I have to write it again
It's all right. ये हो जाएगा cobalt H2O taken 6 2 plus 2 hydroxide ions, arrow cobalt 2 hydroxide के precipitates, pink precipitates and 6 water molecule. Write an equation for the reaction between this and excess of concentrated hydrochloric acid. Oh, फिर दोबारा से लिखते हैं. It's all right, no issue. ये हो जाएगा H2O taken 6 2 plus 4 chloride ions, reversible sign, COCl4 2 minus plus 6 H2O. All right, define stability constant. तो stability constant की definition है वो आपकी कोर्स बुक के अंदर वो कैटेगोरिकली लिखी हुई है. हम उसी इक्वेशन को यहाँ उसी डेफिनेशन को यहाँ लिख देते हैं. It is the equilibrium constant for the formation of complex ion in a solvent all right. और ये भी लिख देते हैं from its constituent ions. Write an expression for the stability constant of this complex ion. Okay, तो हमारे पास इक्वेशन तो ये है. Okay, I have to make the equation, guys. So बनाते हैं इस इक्वेशन को, कहीं यहाँ बना के दिखा देते हैं. ये है आपके पास COH2O taken 6 2 plus और ये हमारे पास 6 अमोनिया. लाइगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, 6 वाटर बनेंगे प्लस कॉम्प्लेक्स बन जाएगा CONH3 taken 6 2 plus, राइट. तो जब भी हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखते हैं, यू नो कि हम वाटर को कभी भी शो नहीं करते. और स्टेबिलिटी कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखते वक्त चार्ज हैज टू बी इनसाइड द ब्रैकेट, एज वी नो. अगर चार्ज को हमने बाहर रखा तो फिर वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर को रिप्रेजेंट करेगा, कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा. इसका मतलब दिस 2 plus हैज टू बी इनसाइड द ब्रैकेट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. तो ये हो जाएगा वाटर, चार्ज हैज टू बी इनसाइड द ब्रैकेट एंड कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया. अमोनिया के 6 मोल्स हैं, इसलिए पावर 6 हो जाएगा. आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. फिर वो कह रहे हैं give the units of the stability constant of this complex ion. आप जानते हैं कि इसकी यूनिट है मोल पर डीएमक्यू, इसकी भी यूनिट है मोल पर डीएमक्यू, और ये तो ये हो जाएगा मोल पर डीएमक्यू. वर्किंग करनी पड़ेगी थोड़ी सी, बट मैनेजेबल है. मोल पर डीएमक्यू इनटू ये मोल पर डीएमक्यू का 6 होगा, तो ये हो जाएगा मोल 6 डीएम माइनस 18. सो यहां से आपके पास आ जाएगा मोल इनवर्स 6 एंड डीएम 18. सो मैं इस यूनिट को एज इट इज यहाँ कॉपी कर देता हूँ. आई होप आपको समझ में आया कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ. फिर वो कह रहे हैं the numerical value of the stability constant for this complex ion is this. In an aqueous solution, concentration of this complex ion is this, and the concentration of ammonia is this at equilibrium. Calculate the concentration of complex ion in this solution. Okay. Okay.
सो व्हाट वी नीड टू डू इज कि हमें वैल्यूज प्लग इन करनी है फॉर्मूले में। कौन सा फॉर्मूला? इस फॉर्मूले में वैल्यूज प्लग इन करनी है। तो मैं डायरेक्टली वैल्यूज प्लग इन कर देता हूँ। मुझे स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है 7.7 into 10 to the power 4 equals to कॉम्प्लेक्स आयन की कॉन्सेंट्रेशन है 0.0740। कॉम्प्लेक्स आयन की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए वो मुझे कह रहे हैं, तो मैं इसको x ले लेता हूं यहाँ पर, इनटू अमोनिया की कंसंट्रेशन इज गिवन विच इज 0.480, और क्योंकि उसकी पावर 6 है इसलिए इसको 6 पावर में लेके जाएंगे। तो यहां से अगर x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7, मेरे पास आ रहा है 7.6 आ रहे हैं मेरे पास। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? 7.6 मोल पर डीएम। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा गाइस। Let's move on to the next part of the question. The structural and discrete formulae of the three aromatic compounds A, B, C are shown in figure. Okay. Class C. Note, this is your carboxylic acid, and from this carboxylic acid, we have more electronegative chlorine atom. इसका मतलब ये हुआ कि इस क्लोरीन एटम का इफेक्ट इस फंक्शनल ग्रुप के ऊपर ज्यादा होगा। इसका मतलब ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन को आयोनाइज करने में बहुत ही ज्यादा सपोर्ट कर रहा होगा बिकॉज ऑफ इट्स नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ऑन द अदर हैंड वी हैव ओनली carboxylic acid here. On the other hand, we have only OH here. So ये basically आपका phenol है, ये carboxylic acid है और ये भी carboxylic acid है, but this carboxylic acid is attached to chlorine. तो वो आपसे कह रहे हैं compare the relative acidities of A, B and C. तो most acidic जो है वो आपका C होगा, उससे कम जो है वो A होगा, जो सबसे कम है वो आपका B होगा। Carboxylic acid is stronger than phenol. और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच कर दूं तो एसिड स्ट्रेंथ और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, व्हिच इज व्हाई C is greater than A and A is greater than B. सो एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं तो हम बताएंगे क्लोरीन हैज स्ट्रॉन्ग नेगेटिव inductive effect so it ionizes hydrogen easily, also it stabilizes the anion. Why it stabilizes the anion? That's what we have discussed in the class, but let me remind you, क्यों stabilize कर देता है ये देख लीजिए। That's going to be very very tough in terms of diagram. ये आपका OH है, आयोनाइजेशन हुई तो ऑब्वियसली ये एक एनाइन में कन्वर्ट हो गया, और खास बात ये है कि बिकॉज ऑफ दिस एनाइन रेजोनेंस का प्रोसेस हो रहा होगा। ऑलराइट, बिकॉज ऑफ दिस रेजोनेंस एनाइन स्टेबलाइजेस, एंड हमने ये पढ़ाया आपको कि जितना ज्यादा एनाइन स्टेबलाइज होता है एसिड की स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होती है। तो ये आपका क्लोरीन आ गया,
ये आपका O नेगेटिव और यहाँ पर डबल बॉन्ड, फिर क्या होगा, ये नेगेटिव यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा और ये यहाँ शिफ्ट होगा। इसका मतलब ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे में कन्वर्ट होंगे, विच इज वाई एनाइन बिकम्स स्टेबलाइजेस, जिसकी वजह से इसकी एसिड की स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा होगी, इनफैक्ट सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, why carboxylic acid is stronger than phenol? Uh, in in A, CWH group is electron withdrawing, so it eases the ionization of hydrogen hence ionization of hydrogen, also negative charge is only oscillating on more electronegative oxygen. Okay, methyl benzene can be made from benzene by an electrophilic substitution reaction. Identify a compound that reacts with benzene to form methyl benzene. जाहिर सी बात है, बेंजीन से मिथाइल बेंजीन बनवा रहे हैं, तो it has to be an alkyl halide, that is CH3Cl, and a catalyst is obviously AlCl3 in anhydrous form. Okay. The first step is the reaction, is the generation of electrophile CH3 plus. Write an equation for the reaction that generates this electrophile. So that's easy. CH3Cl plus AlCl3. तो ये कन्वर्ट हो जाएगा AlCl4 नेगेटिव में और ये हो जाएगा CH3 प्लस में। ठीक है, जो मैंने क्लास में करवाया मैंने उसको और मजीद शॉर्ट करके दे दिया बिकॉज इट हैज ओनली 1 मार्क। वो कह रहे हैं डिस्क्राइब द मैकेनिज्म for the reaction between benzene and electrophile, include all relevant curly arrows and charges. All right, ये इससे रिएक्शन करेगा तो ऑब्वियसली पाई कॉम्प्लेक्स बनेगा। ओके, यहाँ पर H, यहाँ पर CH3 और ये हो जाएगा आपका प्लस, shifting of bond into the ring takes place, removal of hydrogen takes place, and as a result you will get what, your product, which is your methyl benzene, और यहाँ से हाइड्रोजन आयन रिमूव हो जाएगा। Okay, next part is identify a suitable reagent to oxidize methyl benzene into benzoic acid. If you remember, if you can see, methyl group is converting into CWH. ऐसा जब भी होता है, हमने पढ़ा है कि उसमें KMnO4 यूज होता है। वो कह रहे हैं write an equation for this reaction using O to represents one atom of oxygen from the oxidizing agent. The reagent is basically acidified solution of KMnO4, और अगर मैं उसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखूंगा तो ये हो जाएगा C6H5CH3। ये आपका मिथाइल बेंजीन है, हम इसको ऑक्सीजन एटम के साथ ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, ये कन्वर्ट हो रहा है C6H5COOH में, एंड ऑब्वियसली वाटर भी बनेगा। ठीक है, अब आप नोट करो हाउ मेनी
ऑक्सीजन से हाउ मेनी हाइड्रोजन्स हियर, यहाँ 3 थे, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन्स हो गए, बैलेंस हो गई। हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स हियर, 2 + 1 3। तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर 3 लगाऊंगा, इस तरह से मेरी ऑक्सीजन की जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाएगी। ओके, methyl benzene and benzoic acid are both nitrated with a mixture of concentrated nitric acid and sulfuric acid to give mononitrated products. The structural formulae of these products are this and this respectively. Draw the structure of these two products. Methyl ben oops, my bad. मिथाइल बेंजीन की जब नाइट्रेशन होगी तो जाहिर सी बात है नाइट्रो ग्रुप अटैच होगा, और उसने बेटा एक ही नाइट्रो ग्रुप अटैच किया है। इसका मतलब वो नाइट्रो ग्रुप हम पैरा पोजीशन के ऊपर अटैच करेंगे, फोर्थ पोजीशन के ऊपर अटैच करेंगे, क्योंकि वो ज्यादा होता है। ठीक है, बेंजोइक एसिड इज बेसिकली व्हाट, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, राइट। तो COH इज बेसिकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। नाइट्रेशन में अगेन हम नाइट्रेशन करेंगे तो 1 नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस करेंगे, और ये नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा 3rd कार्बन एटम पे, क्योंकि वो मेटा पोजीशन है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। सो CH3 इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, पैरा पोजीशन के ऊपर अटैच करेंगे। ये ऑर्थो पैरा डायरेक्ट, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो मेटा पोजीशन के ऊपर अटैच करेंगे। इस बात का ख्याल रखा जाएगा। ठीक है, व्हिच इज व्हाई इज आस्किंग द स्ट्रक्चर ऑफ द टू प्रोडक्ट्स। ठीक है, और ये मेक श्योर कि एक एक NO2 ग्रुप जो है ना वो अटैच हो, इस बात का ख्याल रखें। Then next is a reaction scheme is shown in figure 7.2. Describe the reagents and conditions to produce this compound from this in reaction 2. And the most important thing is कि आपके पास NH2 है और वो कन्वर्ट हो रहा है डाइजोनियम क्लोराइड में। तो जब डाइजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट होगा NH2 से, तो उसके लिए रिएजेंट चाहिए होगा आपको सोडियम नाइट्राइट इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, और कंडीशन चाहिए होगी बिलो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ओके, फिर वो आपसे कह रहे हैं डिस्क्राइब हाउ this compound can be produced from this in reaction 3. reaction 3 आप नोट करो, रिएक्शन 3 में डाइजोनियम आयन कन्वर्ट हो रहा है फिनोल में। तो हमने क्लास में बताया था कि हम वाटर अंडर हीट यूज करेंगे। सो हम स्ट्रेट अवे यहाँ पर लिखेंगे वाटर और हम लिखेंगे हीट। ठीक है, हम वाटर और हीट लिखेंगे। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द डाई मॉलिक्यूल Y form when diazonium chloride and phenol react together in reaction 4. Describe the conditions for this reaction. Okay. पहली तो बात ये कि कंडीशन हमारे पास लो 10 डिग्री सेल्सियस है, और फिनोल को न्यूट्रलाइज कर हम सम अमाउंट ऑफ NaOH भी यूज करेंगे, तो एजो डाई बनेगी। whenever diazonium chloride and phenol react together, एजो डाई प्रोडक्ट इज फॉर्म। सो बेटा मैं एजो डाई की प्रोडक्ट बना रहा हूं, आप जरा देखिए। ये CH3 हो गया, ये कन्वर्ट हो जाएगा N डबल बॉन्ड N में, ये कन्वर्ट हो रहा है फिनोल में, इसमें एक CH3 भी अटैच है, ये CH3 अटैच कर दिया, ये OH आ गया। दैट्स आवर प्रोडक्ट। ठीक है, ये बहुत ही ट्रिकी पार्ट था, ये जहन में रखिएगा कि इसमें भी एक CH3 था, इसमें भी एक CH3 था। ये वाला CH3 जो है मैंने पैरा पोजीशन के साथ अटैच किया, ये वाला CH3 मैंने ऑर्थो पोजीशन के साथ अटैच किया। सही है, और ये भी याद रखिएगा हमने पढ़ाया था कि OH जिस कार्बन के साथ अटैच होता है उसकी बिल्कुल जो ऑपोजिट कार्बन होती है वो डाइजोनियम ग्रुप के साथ या नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। इस बात का ख्याल रखा है मैंने, और यही बात मैंने क्लास में भी समझाई। ठीक है, ट्रिक समझाई थी कैसे काम करना है। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। Question number 8.
When answering this question, it should be assumed that together all the hydrogen atoms in a benzene ring results in a single unsplit break at delta 7.2 in proton NMR spectrum. That's what I have told you in the class कि 5 protons की अगर singlet होती है तो इसका मतलब बेंजीन रिंग अवेलेबल होता है जिसकी केमिकल शिफ्ट की रेंज मैंने आपको क्लास में बताई है 6.9 डेल्टा से 7.4 डेल्टा। तो जो मैंने रेंज बताई है उसमें ये रेंज ऑक्यूपाई हो रही है, ठीक है। वो कह रहे हैं द स्ट्रक्चर्स ऑफ 5 आइसोमेरिक कीटोन्स आर गिवन, ठीक है। ये स्ट्रक्चर्स दे दिए हैं आइसोमेरिक कीटोन्स के। आइडेंटिफाई all the chiral carbon atoms on the structure above, label each carbon atom with an asterisk। तो भाई मुझे तो एक ही chiral carbon atom नजर आ रही है और मैं उसको asterisk से represent कर दूंगा, ये है। That is the only chiral carbon atom in the entire 5 structures। Now the next part is the proton NMR spectrum of one of the 5 isomers is shown in figure 8.1। Okay, identify which of the compounds P, Q, R, S, or T gives this spectrum. Draw the displayed formula of the compound you have identified. Identify the protons responsible for the peak, this, and this on the structure you have drawn. Okay, guys, let's apply n+1 rule। इसके ऊपर n+1 रूल अप्लाई करेंगे तो ये हमें सिंगलेट देगा। इसके ऊपर n+1 रूल अप्लाई करेंगे तो ये हमें ट्रिपलेट देगा। इसके ऊपर n+1 रूल अप्लाई करेंगे तो ये भी हमें ट्रिपलेट देगा। ये हमें सिंगलेट देगा, सही है। सो 2 singlets and 2 triplets whereas we have 1 quadrate। तो क्वाड्रेट तो नहीं मिली हमें इससे, इसलिए ये गलत हो गया, ठीक। इससे देखें ये ट्रिपलेट देगा, ये क्वाड्रेट देगा अकॉर्डिंग टू n+1 रूल, ये सिंगलेट देगा, ठीक है। आई बिलीव यही हो सकता है क्योंकि एक ट्रिपलेट है, एक क्वाड्रेट है, एक सिंगलेट है। और बेंजीन की भी क्या होगी, बेंजीन की भी सिंगलेट होगी बेटा। n+1 रूल अप्लाई करेंगे, उसने क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ से मुझे 2 सिंगलेट्स मिल रही हैं जो कि सेटिस्फाई हो रहा है, एक क्वाड्रेट मिल रही है जो कि सेटिस्फाई हो रहा है, और एक ट्रिपलेट मिल रही है जो कि सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब ये जो स्पेक्ट्रम दिया हुआ है ये स्पेक्ट्रम आर का है, आर कंपाउंड का है, ठीक है। बाकी तो मुझे कहीं पर भी कुछ नजर नहीं आ रहा है एज सच जिससे मुझे ये स्पेक्ट्रम मिल जाए। सो मैं ये स्पेक्ट्रम क्या है, इथाइल ओके बेंज ओ डिस्प्लेट कह रहा है। माय गुडनेस, दैट्स द टफ टास्क। डिस्प्लेट के लिए तो जरूरी है कि हम सारे के सारे बॉन्ड्स मेंशन करें। एनी हाउ पढ़ लेते हैं, कोई इशू नहीं है। बेंजीन है हमारे पास, उसके बाद CH2 है, ये हमारा CH2 आ गया, ऑलराइट। फिर CO है हमारा, फिर हमारे पास CH2 है, और फिर हमारा CH3 है, ये हमारा R हो गया, ठीक है। तो हमने डिस्प्लेट फॉर्मूला बना दिया। प्रोटॉन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीक 3.7, 2.5 एंड 1.0। सो गाइस याद रखिएगा, ये आपके पास है CH3, ये CH3 आपको 1.0 डेल्टा के ऊपर पीक देगा, और पीक आएगी आपके पास ट्रिपलेट, सही है। फिर बेटा आपके पास है CH2, इसके नेबर में 3 प्रोटॉन्स हैं। तो ये आपको देगा बेटा क्वाड्रेट, और स्पेक्ट्रम में देखते हैं कि ये क्वाड्रेट किस केमिकल शिफ्ट के ऊपर आ रही है, 2 पॉइंट समथिंग के ऊपर आ रही है, तो हम 2.5 लिख देते हैं डेल्टा, ठीक है। कंफर्मेशन हो गई। फिर उसके बाद हमारे पास दिस CH2
ये हमें सिंगलेट दे रहा है और इस सिंगलेट की केमिकल शिफ्ट की रेंज हमारे पास कितनी है 3.7 डेल्टा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास है C6H5, इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है 7.2 डेल्टा। और ये है हमारे पास 5 प्रोटॉन्स की। ऑलराइट गाइस, सो मैंने आपको ये पूरा का पूरा जज करके दे दिया कि ये किस तरह से है। तो मैं इसमें टैगिंग कर देता हूँ। होल्ड ऑन, ये आपका बेंजीन रिंग हो गया, ये आपका CH2 हो गया, ये CH2 ये वाला हो गया, और ये CH3 ये वाला हो गया। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं आपसे नेम द स्प्लिटिंग पैटर्न ऑफ द पीक एट डेल्टा 3.7, एक्सप्लेन व्हाई इट हैज दिस स्प्लिटिंग पैटर्न। भाई 3.7 के ऊपर सिंगलेट आ रही है, इसका मतलब इसके नेबर में जो है कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, राइट? गिव सिंगलेट because it has no adjacent hydrogen। ओके, सही ना? वो इसकी बात कर रहे हैं आपसे, 3.7 पे इसकी बात कर रहे हैं कि भाई इसकी 3.7 के ऊपर सिंगलेट क्यों आ रही है। तो जाहिर बात है सिंगलेट उसी वक्त आती है जब नेबर में कोई हाइड्रोजन ना हो। Okay, next is choose from the letter P, Q, R, S, and T to identify two compounds that each have a doublet peak in the proton and NMR spectrum. Okay, doublet peak identify करनी है। Okay, P को ओपन करके देखें, P का स्ट्रक्चर ओपन करो, डबलेट पीक निकालनी है। CO CH CH3 CH3। आप सब जानते हैं कि इन 6 प्रोटॉन्स का केमिकल एनवायरनमेंट सेम है, और इन 6 प्रोटॉन्स के नेबर में जो कार्बन है उसके पास एक हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये मुझे डबलेट देगा N+1 रूल के लिहाज से। तो P से मुझे डबलेट मिल रही है। ठीक है, इसी तरह से T को देखो, ये मेरा P था। लेट्स टॉक अबाउट T। ये हो जाएगा C6H5, then CH, then CH3, then CO, and then CH3। ओके, चेक दिस। इस CH3 के नेबर में जो कार्बन है उसके पास एक हाइड्रोजन है, तो N+1 रूल अप्लाई करूंगा तो यहां से भी क्या मिलेगा, डबलेट। तो इसका मतलब P और दोनों मुझे क्या प्रोवाइड करें, डबलेट। तो मैं यहाँ लिखूंगा P N T। फिर वो कह रहे हैं the compound with only 3 peaks in its proton NMR spectrum। 3 peaks। ओके ओके, 3 peaks जो हैं वो मुझे लग रहा है P के अंदर आएंगी। कैसे आएंगी जरा देख लीजिए। इन दोनों का एनवायरनमेंट क्या है, सेम। और इन दोनों 6 प्रोटॉन्स के नेबर में एक हाइड्रोजन है, तो ये क्या देंगे आपको, डबलेट। ठीक, उसके बाद लेट मी रीराइट दिस थिंग। एक मिनट, लेट मी रीराइट दिस थिंग, वरना काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हमारे पास जगह है यहाँ, चले हम इस स्ट्रक्चर को उठा के दोबारा से लिखते हैं। C6H5CO। ठीक है, वेट करें। C6H5CO, फिर आपके पास क्या है, CH3। चलें अब देख लेते हैं थोड़ा बेहतर अंदाज से कि ये 6 प्रोटॉन्स हैं,
इनके नेबर में जो कार्बन है उनके पास एक हाइड्रोजन है, तो 6 प्रोटॉन हैव सेम एनवायरनमेंट। और गिव्स डबलेट, राइट। देन इसके ऊपर अप्लाई करो, इसके नेबर में 6 प्रोटॉन्स हैं तो n+1 रूल लगाओगे तो 7 पीक्स आएंगी। लेक्चर में मैंने कहा था 7 पीक्स को सेपरेट पीक कहा जाता है। 7 पीक्स मीन सेपरेट पीक्स, लेकिन एग्जामिनर क्वाड्रेट के बाद जितनी पीक्स होती हैं आपके सिलेबस में उनको मल्टीप्लेट किया रहता है। हमने थोड़ा सा डिटेल से पढ़ा है। हमने कहा है कि भाई 5 पीक्स होंगी तो क्वांटेट होगा, 6 पीक्स होंगी तो सेक्सट्रेट होगा, 7 पीक्स होंगी तो सेपरेट होगा। और हमने आपको लेक्चर में ये बताया था कि जब 7 से ज्यादा होती हैं तो मल्टीप्लेट पीक होती है। तो हम इसको सेपरेट बोलेंगे, मल्टीप्लेट नहीं बोलेंगे। दैट इज आवर सेकंड एनवायरनमेंट ऑब्वियसली। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बेंजीन का अपना एक एनवायरनमेंट होगा और वही एनवायरनमेंट है सिंगलेट का। तो 3 पीक्स पी के अंदर मुझे मिली, मैं यहाँ लिख दूंगा पी, ठीक है। फिर सूटेबल फिगर सॉल्वेंट तो हम या तो CdCl3 यूज करते हैं एज पर लेक्चर, या फिर CCl4 यूज करते हैं। तो इन दोनों में से कोई भी एक लिख दीजिए, यू विल गेट योर मार्क्स। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं द प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रम ऑफ कंपाउंड T इज कंपेयर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ B2O and in the absence of B2O. Describe any differences between the two spectra. Explain your answer. Since we don't have any OH functional group, any carboxylic functional group, any amine functional group, which means यहाँ पर D2O का कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी प्रोटॉन की ड्यूटेरियम के साथ। तो हम यहाँ लिख देंगे नो substitution of proton through deuterium hence there will be no change in spectrum. It means the spectrum before D2 and after D2 will remain same. Okay, complete table 8.1 below to give the number of peaks in the carbon-13 NMR spectrum of each compound. Carbon-13 spectrum of each compound. Carbon-13 spectrum of each compound. Okay, carbon-13 spectrum of each compound. तो ये फर्स्ट है मेरा, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है और ये सिक्स्थ। तो नंबर ऑफ पीक्स कितनी आ गई? 6। ठीक है, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। फिर आपके पास है ये 1 और ये भी 1, ये 2 और ये भी 2, ये 3, ये भी 3, ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 पीक्स। फिर ये 1 और ये भी 1, क्योंकि इनका एनवायरनमेंट सेम है, सेम डिस्टेंस अटैच है। ये भी 2, ये भी 2, सेम डिस्टेंस अटैच है। 3, सेम डिस्टेंस अटैच है। 4, ये 4 पीक्स हो गए। ये 1 और ये 1, क्योंकि सेम ग्रुप है, सेम एनवायरनमेंट है। ये भी 2 और ये भी 2, सेम डिस्टेंस अटैच है दोनों। ये और ये इसके लिहाज से थर्ड और ये इसके लिहाज से थर्ड। इसका मतलब 3 पीक्स होंगे यहाँ पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। Tyrosine and lysine shown in figure 9.1 are naturally occurring amino acid found in proteins. ये टायरोसिन का स्ट्रक्चर है जिसमें NH2 भी है, फिनोलिक ग्रुप भी है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है। लाइसिन में 2 NH2 ग्रुप हैं और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक है, the isoelectric point of lysine is 9.47. Draw the structure of lysine at the stated pH in the boxes below. By the way, ये जो pH है ये बफर सोल्यूशन की pH नहीं है, ये नॉर्मल pH है। तो हमें ये देखना है कि भाई अंडर दिस pH लाइसिन क्या करेगा। आप नोट करें, इसकी खुद की pH अल्कलाइन है लेकिन इस वक्त एसिडिक मीडियम है।
हम यहाँ लिख देते हैं एसिडिक मीडियम कंसिडर करेंगे। वैसे तो ये न्यूट्रल पीएच होती है, बट हम उसकी पीएच के लाइसिन की पीएच के लिहाज से इसको एसिडिक लेंगे। अगर एसिडिक लेंगे तो जाहिर सी बात है प्रोटोनेशन होगी। प्रोटोनेशन ना, द क्वेश्चन इज कहाँ पर होगी, इस NH2 पे होगी, इन दोनों पे होगी, इस NH2 पे होगी, इस पे होगी, या इन दोनों पे होगी। ऑब्वियसली प्रोटोनेशन जो है वो इस NH2 के ऊपर होगी, क्योंकि ये साइड चेन है और इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन की जो अवेलेबिलिटी है वो ज्यादा होगी। ठीक है, सो हम बेसिकली यहाँ पर आंसर देंगे NH3 प्लस CH2 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 CH2, 4 CH2 हो गए, 1 2 3 4। उप्स, एक मिनट, NH3 प्लस CH2 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 CH2, जैसे CH, ये NH2 आ जाएगा आपके पास, और ये हो जाएगा COOH। ठीक है, 9.47, और इसकी भी pH 9.47 है, जिसका मतलब ये ज्विटर आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो ज्विटर आयनिक फॉर्म का मतलब ये हुआ कि ये न्यूट्रल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अगर ये न्यूट्रल फॉर्म में एग्जिस्ट कर ही रहा है तो ऑब्वियसली हम इसको थोड़ा सा देख लेंगे कि भाई किस तरह से न्यूट्रल फॉर्म में रह रहा है ये। तो हम कह देंगे कि ये NH3 प्लस है, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया इसने इंटरनल एसिड बेस रिएक्शन की वजह से। ये NH2 एज इट इज रहेगा, और ये COO नेगेटिव हो जाएगा, ज्विटरानिक फॉर्म हो गई। यानी यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो इसने हासिल किया और उसमें कन्वर्ट हो गया। वैसे जरूरी नहीं है कि ये दोनों हो, आप चाहें तो इन दोनों को भी इंटरनल एसिड बेस रिएक्शन से ज्विटराइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कन्वर्ट नहीं होगा, आई बिलीव वो भी आंसर सही होना चाहिए एग्जामिनर की नजर में। ठीक है, lysine at pH 12, since the medium is alkaline, तो alkaline medium में COOH प्रोटोनेट हो जाएगा, तो NH2 will remain intact as it is, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये NH2 है, CH2 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 CH, और ये क्या हो जाएगा NH2, और ये क्या हो जाएगा COO नेगेटिव। ओके, वो कह रहे हैं when ethanoic acid is treated with PCl5, product D is formed. Guys, you know that when ethanoic acid and PCl5 react together, obviously ethanoyl chloride is formed. And we have done this equation in the class. Equation ये थी आपके पास, ethanoic acid है आपके पास, आप इसको PCl5 से रिएक्शन करवाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इथेनॉइल क्लोराइड में, विच इज CH3COCl प्लस HCl प्लस POCl3। तो उसने जो D कहा है वो इस प्रोडक्ट को कहा है। ठीक है, D जो है वो इथेनॉइल क्लोराइड है। फिर वो कह रहे हैं व्हेन इथेनॉइल क्लोराइड इज एडेड टू टायरोसिन, टू डिफरेंट आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स E and F are formed. E has an ester linkage, F does not. Draw the structure of D, E and F in the boxes below. तो जो D है वो आपका इथेनॉइल क्लोराइड है, ये स्ट्रक्चर बना दिया हमने इथेनॉइल क्लोराइड का। अच्छा, E, अब इथेनॉइल क्लोराइड जो है वो टायरोसिन के साथ जब रिएक्शन करेगा और वो फिनोल से रिएक्शन करेगा तो एस्टर बनाएगा, राइट, और जब वो एमाइन से रिएक्शन करेगा तो अमाइड बनाएगा। और ये बातें हमने क्लास में की हुई है कि व्हेनेवर फिनोल रिएक्ट्स विद एसाइल हैलाइड, एस्टर्स आर फॉर्म, व्हेनेवर एमाइन रिएक्ट्स विद एसाइल हैलाइड, अमाइड्स आर फॉर्म। तो इसका मतलब टायरोसिन से एक एमाइड बनेगा और एक एस्टर बनेगा। चलें एस्टर बनाते हैं सबसे पहले, क्योंकि उसने कहा E हैज एन एस्टर लिंकेज, उसने हमें ये क्लू प्रोवाइड किया है। तो एस्टर लिंकेज बनाते हैं, ये हो जाएगा O, ये हो जाएगा CO, ये CH3 हो गया। उसके बाद क्या है, तो बेंजीन रिंग के साथ ये स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के साथ NH2,
एंड देन फिर COOH। सही है। और F जो है उसमें एस्टर नहीं है, इसका मतलब फिनोल एज इट इज इंटैक्ट रहेगा। इनफैक्ट अमाइड बनेगा इस केस में, और अमाइड बनने के लिए जरूरी है कि ये जो NH है ये एसाइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करे, COCH3। ऑलराइट, आई होप यू शुड हैव एन आइडिया कि हाउ टू गो अबाउट सच रिएक्शंस। मैं इससे रिलेटेड आपको रिएक्शन भी करवा सकता हूँ, लेकिन ऑब्वियसली HCl का रिमूवल होगा और एसाइल ग्रुप जो है वो नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर लेगा। याद होने चाहिए ये रिएक्शन, बहुत जरूरी है ये सारे के सारे रिएक्शंस का याद होना। लेट मी ट्राई टू सॉल्व दिस। कोशिश करता हूँ कि एक चीज समझा दूं, बट ये आपका NH2 है, ये आपका COOH है। अगर मैं इसको इथेनॉइल क्लोराइड के साथ ट्रीट करवाऊंगा तो यहाँ से क्लोरीन, यहाँ से H, दोनों मिलकर बनाएंगे HCl। Now the remaining fragments join together to give F. And I hope it makes sense to you कि ये मैंने कैसे डिटरमिन किया था, डायरेक्टली कैसे बना दिया। तो आपकी भी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए इस स्टैंडर्ड की कि आपको स्ट्रक्चर के लिए इन इक्वेशंस को ना बनाना पड़े, और आप बहुत कन्वीनियंटली इन स्ट्रक्चर्स को लिख सकें पेपर के अंदर, ताकि आप अपना टाइम सेव कर लें। बिकॉज 2 आवर का पेपर होता है, तो मतलब 12 मिनट्स में आपको 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो यू शुड बी सो परफेक्ट इन सच एरियाज कि आपको ये बार बार लिखना ना पड़े हर रिएक्शन के लिए। ठीक है, आई इट मेक सेंस टू यू कि ये मैंने F कैसे बनाया, बिल्कुल सेम पैटर्न के ऊपर मैंने E भी बनाया। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ से H और यहाँ से Cl दोनों मिलकर बना लेंगे HCl, और फिर मैंने ये पूरा का पूरा ग्रुप अटैच कर दिया इसके साथ। ऑलराइट, let's move on to the next part of the question. Let's see what we have in it. That's quite lengthy. Complete table 9.1 by drawing the structure of the organic product formed when tyrosine reacts with each named reagent. Okay, tyrosine जब aqueous bromine से reaction करेगा, tyrosine, my goodness, tyrosine का structure चाहिए मुझे। So मैं ये structure लेता हूँ, इसका screenshot लेते हैं ताकि लिखने में आसानी हो हमें। All right, यहाँ लिखते हैं टायरोसिन। माय गुडनेस, काफी बड़ा स्ट्रक्चर है। चलो, अब इसमें से हम एक्वस ब्रोमीन की बात करते हैं। तो एक्वस ब्रोमीन सेकंड कार्बन पे अटैच होगा, फोर्थ ऑलरेडी ऑक्यूपाइड और 6 पे अटैच होगा। ठीक है, अगर हम टायरोसिन को दोबारा से लिखें और हम NaOH से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बेटा आपको तो पता ही है कि यहां से ये H रिमूव हो जाएगा, यहां से भी H रिमूव होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनोल बोथ आर एसिडिक, दे विल रिएक्ट विद एल्कली टू फॉर्म सॉल्ट, तो ये Na में कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। नाइट्रिक एसिड है एक्सेस, तो नाइट्रिक एसिड एक्सेस होगा तो ऑब्वियसली बेटा नाइट्रेशन का प्रोसेस होगा, और नाइट्रेशन के प्रोसेस में क्या होगा, NO2 ग्रुप जो है वो ऑर्थो पैरा पोजीशन के ऊपर अटैच होगा। पैरा ऑलरेडी अटैच है तो इसका मतलब ऑर्थो पे जाएगा, दैट इज 2 and 6। तो एक NO2 2 पे लगाइए और एक NO2 6 पे लगाइए। ठीक है, वैसे आप एक पे भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैंने दोनों पे लगा दिया, आप एक पे भी लगा सकते हैं। मैंने दोनों पे क्यों लगाया, मैंने दोनों पे इसलिए लगाया क्योंकि एक्सेस की टर्म यूज की हुई है उसने। ठीक है, मैंने यहाँ पर भी दोनों जगह पे NaOH इंट्रोड्यूस किया है क्योंकि यहाँ पर उसने एक्सेस की टर्म यूज की हुई है। ओके, यहाँ पर भी दोनों जगह पे किया है क्योंकि एक्सेस की टर्म यूज की हुई है। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, a mixture of tyrosine and lysine can be separated by thin layer chromatography under certain conditions. The RF values of lysine is 0.14 and RF values of tyrosine is 0.45. What is mean by RF value? RF value तो बेटा बहुत सिंपल है, it is a ratio of the distance traveled by, since लाइसिन और टायरोसिन दोनों अमीनो एसिड है तो हम अमीनो एसिड की टर्म में बात करेंगे,
It is a ratio of the distance traveled by amino acid to the distance traveled by solvent. All right, वो कह रहे हैं suggest an explanation for the difference in RF values. टायरोसिन की RF वैल्यू ज्यादा है जबकि लाइसिन की RF वैल्यू कम है. इसका मतलब टायरोसिन जो है वो ज्यादा एफिनिटी शो कर रहा होगा सॉल्वेंट के साथ, लाइसिन जो है वो ज्यादा एफिनिटी शो कर रहा होगा स्टेशनरी फेज के साथ. एक की वैल्यू कम, एक की वैल्यू ज्यादा. दैट शोज द सेम फैक्ट कि टायरोसिन हैज शोन stronger affinity means in direction with the mobile phase, that is your solvent. Lysine has shown a stronger affinity with the stationary phase. सही है. I think that's the end of our paper. Thank you very much.